टेस्ट मैच इंडिया इंग्लैंड के बीच चौथे दिन पे जाएगा और चौथे दिन लंच सेशन से पहले खत्म नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, चर्चा हो रही थी आपके बीच, मेरे बीच, हमारे बीच पिछले 3 दिन से, 2 दिन से, कि क्या ये मैच डे 3 पे खत्म हो जाएगा, और लाइक आई वाज सेइंग प्रोबब्ली द लेटेस्ट इट विल गो इज द फर्स्ट सेशन ऑफ डे 4। लेकिन दोस्तों, ऑली पोप जो 100 लगा चुके हैं, 148 नॉट आउट, स्टिल बैटिंग इट स्टंप्स। इंग्लैंड और 316 फॉर द लॉस ऑफ जस्ट 6 विकेट्स। विकेट्स दोस्तों, अभी 4 विकेट हैं। ऑली पोप बस 150 के दहलीज पे खड़े हैं। पर सबसे बड़ी बात यह कि इंग्लैंड अभी इस मैच में है और 126 रन की लीड है। 126 रन। सबसे पहला सवाल दोस्तों, क्या ये मैच अब इंडिया के हाथ से कुछ ज्यादा ही दूर निकल चुका है? I don't think so, because look, there's not too much alarming turn. A couple balls KS Bharat took here, a couple balls from Jadeja and Akshar stayed low, but overall the pitch has not deteriorated to the extent that many of us would have thought by the final session of day 3. Batting मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जितने के पिछले 4-7 साल से, 4-5 साल से हमने इंडिया के अंदर देखा है। इंग्लैंड are alive. They live to fight another day, thanks largely to Ollie Pope. एक दो कैमियो थे, लेकिन जहां स्पिनर शायद उस मकाम तक बॉलिंग नहीं कर पाए जो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहीं जसप्रीत बुमराह ने आके बेहतरीन स्पेल्स डाले हैं। बेन डकेट को क्लीन बोल्ड किया और फिर जो रूट का विकेट लिया, कमाल का विकेट। द बॉल ऑफ द डे वाज अश्विन टू बेन स्टोक्स to almost rival the ball that Akshar Patel bowled to Johnny Bairstow on day 1. But still, India are not out of this match. मेरा ये मानना है कि जो खराब या जो एवरेज इंग्लैंड बॉलिंग है, खासकर स्पिन बॉलिंग, उनको कम से कम 250 रन तो बनाने पड़ेंगे। जहां 150 लगा मुझे शायद एक हैंडी टारगेट होगा if England had bowled better spinners and had bowled with a bit more nip. But with Jack Leach perhaps not going to bowl his full quota, I think यहां से 250 का टारगेट तो कम से कम देना पड़ेगा, लेकिन मैं मानता हूं कि वो नहीं होगा। Hats off to Ollie Pope. Has he played one of the best England innings after Kevin Peterson in 2012? That 186 from Kevin Peterson was a once in a lifetime innings, perhaps the best innings in India by a visiting batsman. अभी तो हम उसके ज्यादा मुकाबले में नहीं डाल सकते हैं पोप को, but he's on track. If he keeps batting and gets near 200, and if England really push India into a corner, we might look at this as one of the best innings from an Englishman in India. Of course, उनको chances मिले, but कौन सी पारी, कौन सी बड़ी सेंचुरी में chances नहीं होते दोस्तों। Yes, indeed, England 316 for 6, a lead of 126. शायद कल तक ये मैच खत्म हो जाएगा, irrespective of where it goes. I think India are still in the driver's seat. Yes, they'll be disappointed with some average bowling from the 3 spinners, Ashwin, Jadeja, and Akshar Patel. There were some good balls, but there were also a lot of half trackers, a lot of darts, some bad use of the DRS from Rohit Sharma, Kona Bharat, and Akshar Patel. But again, for me, it's Ollie Pope is the hero of this match so far, to take a match which I thought would not go too much into day 4, to now ensure that at least lunch tak to par ho jayega match. You never know if Rehan Ahmed can hang around. Tom Hartley got 24 odd. If Jack Leach bats the way he bats, he's got 90 odd is his highest score. You never know if this lead can swell to 200, 225. Anything is possible. But I will still say India very much in the driver's seat. अगर एक शिकायत है मेरी इंडिया से, more than the average bowling, more than the poor use of the DRS, it was Ravindra Jadeja bowling 6 no balls in an innings. आप एक स्पिनर होके नो बॉल कैसे डाल सकते हो, फ्रंट फुट नो बॉल्स? ये काफी साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है जडेजा के साथ. It's something that I want to get your views on this live stream brought to you by Daffy News. 6 no balls, something which more than field placings, more than frustrated bowlers, more than average spin bowling. It was 6 no balls that really got to me. These no balls don't count. No wicket fell off a no ball. But as a spinner of Jadeja's class, 6 no balls, somewhat worrying. But all said and done, इंडिया फिर भी आगे है इस मैच में. हाँ, 126 रन पीछे है, पर जिस लेवल की बैटिंग इनके पास है, and the way the pitch is still pretty good for batting, I don't think India should be too overly concerned. Still, in my mind, India the favorites to wrap up this match, unless Ollie Pope and the tail can produce some more magic on day 4 in Hyderabad. Okay, बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं. मैं समझता हूँ बहुत लोग आज काफी फ्रस्ट्रेटेड होंगे इंडियन टीम की परफॉर्मेंस को लेकर. Let's see who's the most frustrated. Well, there you go. Shreyaj saying weak fielding, weak bowling, weak captaincy. Why do anyone expect that India will win any cup?
I'm not going to compare the test performance to white ball cricket. India are just can't chodo. I don't want to go there, but we're Indian mediocre analysts who don't point out opponents' faults. We're Indian mediocre analysts who don't point out opponents' faults. Bhai, this is I've been saying this is one of the worst bowling attacks, if not the worst bowling attack that England have ever brought to India, which is why I still think India are favorites for this match. क्योंकि अगर 180 190 200 का टारगेट है इस घटिया बॉलिंग अटैक तो इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीत नहीं सकती कहां इंग्लैंड ने अच्छे पॉइंट्स आज हासिल किए इन माय बुक एटलीस्ट is the way that they've kept India. First of all, they got the last three wickets for what, 15 odd runs to 421 to 1 to 436. हाँ, 15 रन के लिए set दो बल्लेबाज निकाले and Ollie Pope, hats off to Ben Duckett for that 47 odd. Hats off to Zach Rowley. But Ollie Pope batting at the end of the day on 148. Okay, India were poor, but India are allowed to be poor. They've rarely been poor in the last 10, 11 years. They won 16 consecutive series in a row. So I'm not going to be too harsh on the bowlers. अगर एक दिन कोई सामने का batsman टिक गया, but my point is 126 going to be enough with the crap bowling that England has? I don't think so. गुड इवनिंग उत्सव जीतेगा टीम इंडिया बिल्कुल दीपक जीतेगा तो इंडिया अनलेस ये टारगेट 250 बन जाता है और कुछ पिच टूटने लगती है क्रैक करने लगती है विद द काइंड ऑफ बॉलिंग वी सॉ दैट एवरेज वर्स देन एवरेज इंग्लैंड बॉलिंग इंडिया वोंट लूज दिस मैच भाई कल जो 6 विकेट गवाए इंडिया ने बॉलर ने कितने अपने दम पर कमाए अंडा सारे विकेट कल इंडिया ने दिया एंड आई डोंट थिंक इंडिया विल बैट दैट पोरली अगेन सूर्य कह रहे हैं बॉलर्स लुक फ्रस्ट्रेटेड बिल्कुल जब आप लगातार 11 साल से 16 सीरीज जीते हो 11-12 साल में आप केवल 3 टेस्ट मैच हारे हो तो आप थोड़े शॉक तो होंगे बट again I'm not going to be too harsh on these bowlers on one day. My main problem is more bad use of the DRS and 6 no balls from Jadeja. Shan said it was so poor by Indian side that within one day England found their pace in these conditions. Sahi baat hai, but I think India are allowed to have one bad day out of many years. 16 test series India have won in a row since they lost the last series. So look, it's good for Ollie Pope, it's good for England's confidence, but England are still very far behind in this match. Field placements were bad by skipper Rohit, but tomorrow Team India is going to thrash him. I think Rohit Sharma is going through a bad time. We discussed this on the first day. Why is a spinner starting with a deep mid wicket, deep square leg, and deep point? So thoda field placings have been off from Rohit Sharma, but the point is India is going to win this match inside 4 days. So we'll save the harsh criticism for some other day. What an exceptional innings from Pope, says Ishan, especially those unorthodox shots he played. Yeah, that one ramp he played over the keeper's head was brilliant. Today's highlights are Ashwin's wicket of Stokes and Pope's batting. What a ball from Ashwin, yeah, brilliant. How much target would be safe? Safe for England? I've already said it. If England have to win this test with this awful bowling, they will need at least 250. यानी कि उनको यहाँ से अभी 125 रन और जोड़ने पड़ेंगे. Anything under 250 against this bowling attack with 2 days to bat, इंडिया आराम से कर लेगी. आज बॉलिंग इतनी वीक क्यों है क्योंकि जडेजा और अक्षर ने थोड़ा तेज डालने की कोशिश करी स्पेस उन्होंने इतना वेरी नहीं किया और देखो ये बेसबॉल है बेसबॉल की हम सब मजाक उड़ा सकते हैं एक दिन पर जब आप सामने वाले बॉलर पर चढ़ जाते हो और ऐसे बॉलर्स पर जिनके ऊपर अब तक कंसिस्टेंटली कोई भी विदेशी टीम चढ़ नहीं पाई तो थोड़ा आप रैटल हो गए बट अगेन इंडिया डोमिनेटेड 2 days one bad day. These are guys who have 490 wickets, 280 odd wickets. एक आध मैच अगर खराब गया 10 साल में इतनी बुरी बात नहीं है. My problem is Jadeja 6 no balls. आप 6 no ball कैसे डाल सकते हो यार? मिताश अरोड़ा कह रहे हैं remind me of the Cook knock in 2012 series first match of Montreal which gave them a boost for the series ahead. But England don't have exactly. Don't be worried. You can be frustrated. आप निराश हो सकते हैं कि आज इंग्लैंड ऑल आउट क्यों नहीं हुई बहुत कम लोगों ने सोचा होगा मैंने नहीं सोचा कि उनके पास अभी 126 का लीड होगा केवल 6 विकेट के नुकसान से बट nothing to really worry about because I don't see them putting up a target of 250. So Cook's innings was the one that set up that fantastic Peterson 186, which to my mind is probably, at least what I've seen in my 28 years of watching cricket, the best knock by a visiting batsman in India. What an innings, man, that was. How much target would be safe? I think you mean, like I said, anything under 250.
टीम इंडिया ही जीतेगा जय भाई, बिल्कुल इस बात तो मुझे कोई डाउट नहीं है, इंडिया आराम से ये मैच जीतेगा। सेफ स्कोर ऑलरेडी आंसर द क्वेश्चन, 250 से अगर आगे गई मामला फिर तो फंस जाएगा, बट जाएगा नहीं। सर पब्लिक कभी खुश नहीं हो सकता, अगर विन भी हुआ तो भी बोलेगा इजी विन ऑपोजिशन। वही तो है पब्लिक, हम सब जनता, हम सब सिलेक्टर हैं, हम सब एनालिस्ट हैं, हम सब पंडित हैं, कोई बात नहीं। मुझे पता है कि इंडिया ये मैच काफी आसानी से जीत जाएगी, बट hats off to the way that England have fought to keep India in the field for the whole day. Kamal ki fight back. Tomorrow, after two rolls, pitch will be batter's nightmare. Possible, but for that, they need to get Ollie Pope out quickly. Good evening, Jay Bhai. Sai Chaitanya is back. बहुत रिवर्स स्वीप किया पोप ने बिल्कुल वही केविन पीटरसन वाली अप्रोच ले लिया। रिवर्स मारो, आपको कुछ जिगरा दिखाना पड़ेगा। दिस इज बेसबॉल। हाउ मेनी ऑफ यू, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, आप जो मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हैं साथिया, आपने क्या सोचा कि ऑली पोप कभी 150 के आसपास होंगे रिवर्स स्वीप मार के? इसे कहते हैं जिगरा, इसे कहते हैं बेसबॉल। लाइक आई सेड एट द स्टार्ट दिस सीरीज, laugh at बेसबॉल के चलने के चांसेस बहुत कम है, but don't write off baseball. Ollie Pope is doing baseball. He's taken three spinners by the scruff of their neck and he's chamat maroed them. England will be packed up under 170, 180. Again, if you get Ollie Pope, every chance. But if Ollie Pope can convert this 148 into 175, 180, if Rehan Eman can get 20, Tom Hartley got 24 in the first innings. इस बैटिंग डेप्थ, इंग्लैंड का जो बैटिंग डेप्थ है, इनका 11 पे अगर मार्क वुड भी आता है, बंदे के पास 2-3 टेस्ट 50s है, तो इफ थिंग्स गो टू प्लान द वे इंग्लैंड, और 250 का लीड बन सकता है, पर हाँ मोस्ट लाइकली आई थिंक 200 से कम। Akshay dropped a sitter, can drop such chances. बिल्कुल, there was an easy catch dropped, but show me any great innings and there'll always be some luck. लक आपको लक की बहुत जरूरत पड़ती है, खासकर इन स्पिनिंग कंडीशंस में। Jadeja has to keep a check on his no balls. Shocking that a player of his class bowls 6 no balls. आप स्पिनर हो यार, क्या कर रहे हो आप? Happy to see a lot of English fans. बिल्कुल, English fans तो हमेशा हर जगह आते हैं। Barmy Army is the best traveling team. Fans. Under 200 is safe score. Under 250 also, I've been saying. Thank you, Akshay and Pope, for taking this match to day 4. बिल्कुल सही है. What a fun match we've had. Why did India go so defensive? First hour, only 15 all out. And England first hour, A7s with 1 wicket down. Because it's baseball. Only one team knows how to play baseball in the world, and it's the baseball team. The way England batted the toiling Indian bowlers, Indian top orders will rule. They couldn't make enough runs. Yes, that's what I was saying. कल हमारे बल्लेबाज ने 6 विकेट मुफ्त में क्यों दिए? आपको अगर चलो मानिए ज्यादा रन्स नहीं बनाए, कल का स्कोर 421, it should have been 421 for 3, not 421 for 7. India really took themselves too lightly yesterday. They took the match too lightly. They gave 6 wickets yesterday. आप लोग जो सब कल मेरे साथ जुड़े थे, आप लोग जो आज मेरे साथ जुड़े हैं, आपने कल का मैच देखा होगा। बाय चांस आपने कल का मैच मिस किया तो आपने हाइलाइट्स देखे होंगे। जो 6 विकेट कल इंडिया ने दिए, क्या एक बॉलर की अच्छी गेंद पे आई? नहीं, 2 लोग तो साला डीप विकेट पे आउट हो गए। Yesterday, India should have been 421 for 3. Instead, because of some loose batting, trying to be heroes when they didn't have to be. Yes, that's you, KL Rahul. Yes, that's you, Shubman Gill. Yes, that's you, Shreyas Iyer. They gifted wickets to one of the worst England bowling attacks to ever come to India. Looks like Ollie Pope is, yes, we've discussed this. Bilkul. Looks like match took me what Jadeja. No, he's not that kind of a guy. England's day, but that shitty captaincy from Roy to allow this single so easily. Correct. He's been defensive all test match. 3 days of somewhat negative approach from Roy, even with his DRS use, even with his own shot also very, very bad. Pope ne to papa yaad dila di. Brilliant knock. Brilliant knock. Any thoughts on the length that our spinners bowl should have been more fuller? Yes, I said this. Jadeja and Akshar in Patel were bowling two, and Akshar in particular, I'm sorry, were bowling too flat. Those darts they were bowling didn't have the kind of depth. Look at Akshar Patel's strength. Akshar Patel ने इस मैच में सबसे बेहतरीन विकेट निकाला जॉनी बेयरस्टो का. It was a slow ball that pitched and took off stump. Today he was bowling a bit too quick and surprising because look, he's not a great turner of the ball. He's a very average bowler. His strength is accuracy. और आज उनकी accuracy थोड़ी घास चढ़ाने गई थी और पेस थोड़ा ज्यादा तेज था आज. Can England defend 250? Very, very tough with this awful bowling attack. I noticed from day one that England ignoring pressure and enjoying the game. Nimesh, that is the essence of baseball right there. Out of topic, end of Shardul Thakur. Don't care because he's not playing right now. How much score England looking for?
Like I said, Shubhankar, this whole live stream, I've been saying England need minimum 250 with this crap bowling attack to really put India under pressure. But again, I mean, unless Jack Leach, recovers and he's fit to bowl, 20 overs a day, unless Rehan Ahmed has been very poor. Tom Hartley has been very, very poor. All these bowlers were given wickets. Jack Leach was given wickets. The spinners were given wickets. Joe Root is the only bowler who's come out and actually looked like a proper test match spinner. So with that bowling attack, 250 से कम मेरे हिसाब से won't be enough to challenge India. Yes, Deepak, you've already commented India will tomorrow. Jay, I 100% agree. India should have realized the pitch is getting progressively harder to take wickets, so more likely that Pope can take in the victory. Small chance क्योंकि अभी आपको बहुत बहुत और रन आपको अपना स्कोर डबल करना पड़ेगा यहाँ से, but day 4 is going to be slightly harder to bat on. हार्दिक कह रहे हैं जय भाई टेस्ट मैच इतने बोरिंग क्यों होते जा रहे हैं? कहाँ है भाई? मुझे बताओ, मुझे एक भी बोरिंग टेस्ट मैच बताओ. Leeds seems to be the only bowler who can create a bit of a problem for our batters. Yes, but if he's injured and he's not able to bowl his full quota, they're going to be down a bowler. But hopefully he gets all the shots he needs, all the medicine, all the magic sprays, and he can come back because he is the best spinner technically in this England team. For Team India, which batsman is the key for the chase? Everyone, if you're chasing over 200, everyone's going to have to score runs. But I would like to see the openers. I think अगर रोहित और जायसवाल जम के खेलेंगे तो ये दोनों टारगेट का 70% खुद ही निकाल देंगे. Bumrah can take wickets without conditions helping him. That's why he's Bumrah. It was Bumrah's masterclass that got ducked. बिल्कुल, I've been saying this for 3 days now. You don't need Mohammad Siraj. अगर pitches ऐसे खेलेंगे, आप सिर्फ बुमराह इकलौते फास्ट बॉलर को खिलाइए, आप जल्दी से कुलदीप यादव को खिलाओ. 4 spinners and Bumrah enough to take care of England if the pitches are going to continue to be like this. Have England pulled a fast on India? Not yet, not yet. Like I said at the start, brilliant innings, reminding me a bit of Kevin Peterson's 186 11 years ago, but the lead is only 126. That's 126 more than many of us would have thought, Gajodhar. But you need to convert that 126 into another 250, 275 to actually. क्योंकि अगर ये ऑस्ट्रेलिया होती, मैं कहता हूं ऑस्ट्रेलिया तो 180 डिफेंड कर पाती विथ मर्फी, लायन, कुनमन. लेकिन इस टीम के पास कोई लायन नहीं है. लायन ने जो कंट्रोल दिया पिछले साल के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को, the ones who reaped the rewards were Kuhneman and Murphy. But right now, Rehan Ahmed very average. टॉम हॉर्टली मुझे क्लब बॉलर लगते हैं, और अगर जैक लीच फिट नहीं है तो उनके ओवर्स पूरे नहीं आएंगे. सो hats off to England for taking in match into day 4, but इनका जीतना बहुत बहुत मुश्किल है. Yes, Deepak, we've discussed many times already. Pope was lucky. Totally agree. Siraj is more. Siraj का कुछ काम नहीं. Siraj के आज स्पाइक्स लेके भी आए हो पे आज ग्राउंड यार, 3 तो उसने ओवर डाले. Can I tell you a fantastic stat that I discovered a couple hours ago? पिछले साल के बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 4 टेस्ट मैच थे. मोहम्मद सिराज ने उन 4 टेस्ट मैच में से 3 खेले. उन 3 टेस्ट मैचेस में से जब ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी बार बैटिंग करी, 3 बार ऑस्ट्रेलिया ने उन 3 टेस्ट मैच में 2 बार बैटिंग करी. मोहम्मद सिराज को केवल 1 ओवर दिया गया था. तो जब मोहम्मद सिराज 3 टेस्ट मैचेस में 2 बार कप्तान ने उनको जरूरी नहीं समझा as a bowler, why are you playing him? He's not going to bowl another over in this match. If you're going to be so reliant, if spinners are going to bowl 75% of the match overs, you may as well bring Kuldeep. Kuldeep is a fantastic bowler. He gives you variety. Imagine Ashwin, Jadeja, Akshar, and then Kuldeep comes in with his Chinaman. If Mohammad Siraj is only going to bowl you, 8 overs in a test match across 2 innings, utterly useless playing him. Or not just him, utterly useless playing a second pace bowler. You don't need him. Bumrah's 1 in a million bowler. Even if we win, seeing this fight back without route to fire, one thing is sure, this stage is not going to be that easy that we thought. Well, like I said, it's either going to be 5-0 to India, or it's going to be 3-2 to India. So, 2 दिन पहले हम सब बोल रहे थे कि हाँ, it could be 5-0. England, do not laugh at baseball, दोस्तों. ये मैच ही देख लो भाई, कौन ऐसे विकेट थ्रो करता है 86 पर. भाई ये तो हमने ऑलरेडी कल हम 35 मिनट तक हमने डिस्कस किया, पर ये बोरिंग तो कहीं नहीं है भाई. इसी में तो मजा है कि जो सुपरस्टार लोग अपने दिमाग में समझते हैं कि 100 इनको मिल जाता है, बट इट्स नॉट बोरिंग. मैं आपकी बात मानता हूं, पर ये बोरिंग नहीं है. बोरिंग पता है बोरिंग क्या होता है? बोरिंग होता है जब एक टीम 600 रन बनाती है, बैट्समैन 300 बनाते हैं, बैट्समैन 250 बनाते हैं, और दूसरी टीम जवाब में 450. जब मैच खत्म होने के आसार 3 दिन में होते हैं, वो हार्दिक वो कहीं से बोरिंग नहीं है. अगर आप मुझे एक्चुअली कोई बोरिंग एग्जांपल दे सकते हो पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ 2 साल में, तो मैं डिबेट आगे लाऊंगा. लेकिन जो कमेंट तुमने किया है
इसमें बोरिंग वाला एंगल तो कहीं से नहीं है भाई। बोरिंग मींस के मैच में मजा नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पाटा विकेट है, बैट्समैन 250 पे 250, जब विकेट गिर रहे हैं, जब श्रेयस अय्यर फालतू में विकेट दे रहे हैं, जब शुभमन गिल एक बार फिर से फ्लॉप हो रहे हैं, जब रोहित शर्मा घटिया शॉट खेल के आउट हो रहे हैं, जब जायसवाल पहली ओवर में आउट हो रहे हैं, इसे बोरिंग नहीं कहते हम, इसे ओवर कॉन्फिडेंट क्रिकेट कहते हैं। फर्क है भाई इसमें। बोरिंग, ये बोरिंग तो कहीं नहीं है भाई ये। Anyways, any more comments on Ollie Pope? Let's see. एज अ क्रिकेट फैन आई एम हैप्पी आफ्टर फाइट बैक। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बहुत खुश हूं यार। मेरा काम एक दिन और बढ़ गया, पर कोई बात नहीं यार, एटलीस्ट मजा तो आ रहा है ना। यू कैन से यार इंडिया जीत गए फिर 2.5 दिन में, नहीं। अब ये मैच डे 4 तक जाएगा, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। हैट्स ऑफ टू ऑली पोप हु यूज्ड सम वेरी एवरेज bowling and a drop by Akshar to get himself 148 not out. Very very well done Ollie Pope, very very well done. What is that weird appeal from LBW? Yeah, Rohit, KS, Bharat, Akshar, they're having a bad test match. So, yeah. But again, Rohit Sharma is still much, much better than Ben Stokes. Ben Stokes ने 14 ओवर के अंदर इंग्लैंड के तीनों रिव्यू बर्न किए। इस मुकाबले में रोहित तो लग रहे हैं जैसे भाई आई डोंट नो टेस्ट इतिहास के सबसे बेस्ट कैप्टन है। 5 डे तक जाना चाहिए विवेक, जाना तो चाहिए अगर अच्छी बैटिंग होती और अगर थोड़ी पता नहीं यार। आई थिंक कल बाई टी खत्म खत्म। श्रेयस अय्यर नहीं लगता टेस्ट क्रिकेट के लिए, जैसे वो गिव करता है लगता है, बहुत बहुत सही लगता है, लेकिन कल जो घटिया शॉट खेला उसने, सोचना पड़ेगा भाई। लेकिन आई टेक श्रेयस अय्यर ओवर शुभमन गिल एनी डे इन टेस्ट क्रिकेट। आई थिंक बेसबॉल टेक्निक कैन बी क्रिटिसाइज्ड, इट कैन बी क्रिटिसाइज्ड बट इट कैन नॉट बी रिटन ऑफ। सर इन फर्स्ट इनिंग्स इंग्लैंड स्पिनर ने, हाँ भाई ये तो सबसे घटिया इंग्लैंड स्पिन बॉलिंग अटैक इनके इतिहास में। बेरसो ने क्या किया कुछ समझ नहीं आया, ही वाज क्लूलेस। ऑली पोप को तो स्पिन खेलने नहीं आता था ना ही, ये क्या हो रहा है। नहीं, स्पिन तो खेलता है भाई वो, ऐसी बात नहीं है। आपको जिगरा चाहिए खेलने के लिए, आज उसने दिखा दिया कि भाई वो इस टीम के वन ऑफ द बेस्ट यंग प्लेयर्स हैं स्पिन बॉलिंग की। अगर रूट नहीं होता तो अब तक लीड 200, हाँ बिल्कुल। रूट का विकेट, बुमराह सलाम वर्षा आंखों पर, क्या गेंद डाला जसप्रीत बुमराह ने। मोर देन द बेंट डकेट बॉल, दैट बॉल टू रूट, भाई रूट तोप चीज है यार। एनीवेज गाइस, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। मैं आपसे कल मिलूंगा, कल तो मैच खत्म है, कल मैच के बाद बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। लास्ट कमेंट फ्रॉम गजोदर, saw some interviews from England players and coaches, they look overly confident calling the first inning score above par. 246 according to them was above par with a better bowling attack. That 246 would have been much better, but nahi hai. Anyway guys, thanks for watching. मैं आपसे कल मिलूंगा। You have a great Saturday. By the way, मेरा बर्थडे आज, बोलो बोलो जय भाई, हैप्पी बर्थडे, बोलो 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 बोलो। चलो, love you all. I'm out of here. Take care. Bye.